Good evening, everybody. Namaste and a warm welcome to today, Wednesday, 30th of March. आज ख्याल कम्युनिटी के साथ हमारा वाइजर वेनेसडेज का सेशन है और आज का जो सेशन है इट इज एन एक्सपर्ट सेशन विद डॉक्टर कृष्णा वोरा. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू प्रिवेंट डेफनेस एंड हियरिंग लॉस. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज यू एज, स्पेशली क्योंकि एज यू एज हमारा जो हियरिंग पावर है वो कम हो जाता है. बहुत सारे रीजंस है उसके लिए और उसके बारे में हम डॉक्टर वोरा के साथ बात भी करेंगे. और हम जो हमारा हियरिंग लॉस है उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी हमारा हियरिंग लॉस हो चुका है तो उसका सुझाव क्या है, ये भी डॉक्टर कृष्णा वोरा हमें देगी. तो वेरी गुड इवनिंग टू डॉक्टर कृष्णा वोरा. आई गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन. मैं हमारे मेंबर्स को डॉक्टर कृष्णा के बारे में कुछ बताता हूँ. तो उन्होंने MBBS MS ENT किया है एंड शी इज ऑल्सो DLODORL. अब आपको पता है व्हेन वी हैव अ डॉक्टर और एन एक्सपर्ट्स विथ सो मेनी अल्फाबेट्स, दे आर नॉर्मली बहुत उन्होंने पढ़ाई की है और दे आर टोटली इनटू दैट मैटर. तो it's glad to know that Dr. Vora has spared some time this evening and she has come to talk to the Khayal community. Dr. Vora, the Khayal community is a collection of elders and seniors from all over the country, and all our members are 55 years and above, and we meet every day at 5:30 in the evening. रोज हमारा अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं. Mondays को like we have a sing along session. Sometimes once a week we also have elder yoga and exercises for our members. हम games भी खेलते हैं. And the most interesting and the most powerful thing that we do is we talk to experts and doctors who inform us about elder care and senior wellness. So thank you first of all for taking the time out and coming here. We know that you are a ENT specialist and you have more than 10 years of experience. We are really looking forward for you to pour some of that experience into our Khayal community and make them more informed about how they can prevent deafness and hearing loss. So a very good evening from the Khayal community. Good evening, everybody. Thank you, Khayal, to choose me. It's nice to meet with everybody. Y'all are doing a superb job of getting together every day so that everybody is connected and is able to connect with everybody. Doctor, would you like to give a short introduction about basically what are the main issues about hearing loss and how it can be understood, especially from the point of view of the seniors, because the Khayal community में सब जो हमारे members है, they are 50, 60, 70 years old. Right. Okay. So I'll just give some brief things which we have to keep in mind when we are talking about our hearing. Okay. Everybody understands English? Kind of? Yeah, English and Hindi both, yes. So why is hearing so important? Okay. Hearing is important because if you don't hear, you cannot talk. When you are hearing, you are able to talk. When you hear, in younger children, they don't learn how to talk. But in the elderly community, if you can't hear, you are not going to be able to connect with other people, and you will not be able to communicate your problems with other people. So hearing is very important, even in every community, I would say. Okay. Now, how do we hear? Let's start with that. We hear with our ears. A sound comes from exterior. It goes into our ear canal. Then there is a tympanic membrane. It's like which we call as a kan ka parda. Then your membrane starts vibrating. Then the sound waves are connected from the ear via the nerve to the brain. The brain kind of figures out what is happening and understands what sound it is, and then we are able to hear. That's how the whole passage goes. So
any problem with any part of that passage, like from either it is in the eardrum or in the passage where the sound comes from the outside to the eardrum or in the nerve, will lead to some kind of hearing loss. So we have to first, when somebody comes to you, you have to figure out what exactly is the problem, and then we have to treat it. Now, hearing is a very sensitive organ. Our ears are a very sensitive organ, and hearing is very important. There is one lady called as Helen Keller. She's a very popular lady. She was a very famous dancer, but she was blind and deaf at the same time. So many people would ask her that, is it worse to be deaf or is it worse to not be able to hear, like blind? So she said between the two, I would think being deaf is worse, because blind people can somehow are able to express themselves. They can at least tell you that what is their problem and connect with other people. But when you are deaf, you can't hear what is happening, and you cannot you cannot communicate your problems with other people. So between the two, deafness was a bigger problem for them. So the same thing is, I want to put importance to that. If you cannot hear, you will have problems in communicating with people. In this age group, if you see some amount of, as we see how as we age, our eyesight gets worse, even the hearing gets affected slowly, and we need to address it, because at what will happen is at some point you won't hear, then your near and dear ones will try to shout and talk to you. But if the hearing becomes worse, then at some point they get tired, and then they can't come, they will stop talking to you, and then you will feel more lonely. You will not be able to even talk with your friends on the phone, or when you meet anybody, you're not able to understand what they are saying. So all in all, it's important that we are able to hear. Now, as I said, what could be the reason for this hearing loss? Sometimes a simple reason like a wax in the ear can also cause hearing loss. Sometimes there may be an infection in our ears, like a boil developing in the ear canal, or in the monsoon season, there's a lot of moisture collecting in the air. Then you can get a fungal infection or a bacterial infection. These are other common infections where you can get a hearing loss. But commonly in this age group, it is the nerve which slowly starts getting weaker, and then the hearing loss comes. And so we call that, this is known as the sensory neural hearing loss or a nerve deficit hearing loss. Okay. Now, how do we know that you have hearing loss? When will you think that maybe I need to do something about it? It will be when somebody will tell you something and you can't understand what is being said. Or you may say they are shouting at you, but you are not able to figure it out. Sometimes you realize that you have to keep increasing the volume of your TV, and then then only you can hear. Whereas other family members will say, please lower down the volume. That means maybe you're not hearing well as well as them. Okay. So at this stage, we have to do what we call as a test or hearing test, which is called as audiometry. In this test, we make you wear headphones, and then different sounds of different frequencies and are given. तो जब अब तक जब जो डॉक्टर बोरा ने हमें कहा था कि सुनना जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हियरिंग, वो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत बार जैसे हेलन केलर ने भी कहा था कि अगर आपको चॉइस दिया जाता है कि आप देख नहीं पाओगे या आप सुन नहीं पाओगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सुनूंगी नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं,
उसके बाद मैं उसका रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाऊंगी। तो हियरिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल। इसके बाद डॉक्टर ने ये भी कहा है कि हियरिंग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि आवाज बाहर से फिजिकली आती है, हमारे आउटर ईयर में जाके फिर हमारा जो कान का पर्दा है उस पे लगती है, वहां से नर्व्स में से जाके हमारे ब्रेन में जाता है वो साउंड सिग्नल, और फिर वो प्रोसेस होता है। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, सो इट टेक्स जस्ट अ कपल ऑफ मिली सेकेंड्स, या रियल टाइम में ये बहुत बार होता है, एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट इस चेन में अगर कुछ भी चीज खराब हो जाती है, जैसे कि हमारे नर्व्स खराब हो जाते हैं, या फिर हमारा इनर ईयर या आउटर ईयर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारा जो हियरिंग चेन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर हम सुन नहीं पाएंगे। और स्पेशली हमारे ख्याल कम्युनिटी के मेंबर्स जो अब सीनियर्स है, उनमें ये देखा गया है कि एज यू एज, जो जैसे हमारे जो नर्व का जो प्रॉब्लम होता है, जिसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, वो ज्यादा प्रेवलेंट है। ओके, तो लेट अस सी डॉक्टर उसके बारे में कैसे हमें और एक्सप्लेन करती है और क्या एग्जैक्टली बताती है। और ऑडियोमेट्री टेस्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, डॉक्टर आपने बोला है। आई थिंक मैंने एक दो बार ऑडियोमेट्री टेस्ट किया है। दे पुट ऑन दीज हेडफोन्स, और बहुत बार आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में वो लोग आवाज सुनाते हैं, एंड यू नीड टू let them know when you can hear that sound, right? Yeah. So thankfully, my daughter was able to fix my presentation. My daughter is very tech savvy compared That's to great. me. That's great. So we'll quickly go through what I've said before. Yeah. Okay. So this is what I said earlier. Helen Keller was asked, is it worse to be, I'm just as blind as I am deaf, but the problems of deafness are more complex, if not more important than those of blindness. What she's saying is deafness is more of a problem for her than blindness. Deafness is much more worse misfortune, for it means the loss of the most vital stimulus, the sound of the voice that brings language, sets thoughts astir and keeps us in the intelligent community of men. So if we are able to hear other people, we will be able to share. So that's why deafness is more of a problem than blindness, according to her. So again, I will discuss the ear. Our ear, this is the outer part of the ear, which is called as the ear pinna, and the passage, which is called as the canal. Then there is a eardrum. Then this part is called as the middle ear, where there are 3 bones. And then last part is called as the inner ear, which has this cochlea. And from here, the sound is going by this nerve to the brain. So again, this is the same thing, repeat. The ear pinna, ear canal, and the eardrum. This is what a normal eardrum looks like. It is a very thin, papery thin membrane, which is almost transparent looking. Then we have the middle ear, where there are 3 bones. The hammer, anvil, and the stirrup, malleus, incus, and the stapes. This is the most important part of the middle ear. These are the 3 separate bones. This is the smallest bone in our body. It's called as the stapes. And then in the last part is the inner ear. It is like the shape of a snail. It's called as the cochlea. From here, the nerves takes the stimulus to the brain. So now how do we hear? The sound comes from outside. It goes through this passage, sets this eardrum vibrating. This makes these 3 bones also vibrate, and it amplifies the sound, makes it louder. Then this stimulus is carried by this nerve to the brain. So what do we mean by deafness? It is a full or partial decrease in the ability to detect or understand sounds. So how do I know that I'm not hearing properly? You have to keep asking other people to repeat their sentences, not able to figure out the words being spoken. If there is one side deafness, in one ear there is deafness, then you're not able to figure out where the sound is coming from.
and you will have difficulty in following music. How do we know that we have hearing loss? By doing the audiometry test. You are seeing this man, he is wearing headphones, and every time a sound which goes from this machine to him, he has to let us know whether he can hear or not. This, after doing the audiometry, this kind of a graph is given to you. In this graph, if your hearing is up to 20, it means that it is normal. Below 20, then it means that you have a problem. There are three types of hearing loss, which I said. The conductive loss, which is when there is a problem in the eardrum or the three bones, which I told you, or if there is wax in the external ear. There is sensory neural loss when there is problems in the brain or the nerve connecting the ear to the brain, and sometimes there is a mixed type of deafness. Now, these are the different types of graphs which we see in different types of deafness. Now, what are the causes? One is as simple as there is wax in the ear. We put drops for the wax and then you have to get it removed with a doctor. Sometimes people put cotton in their ears, it gets left behind. Sometimes some insect goes in the ear, it may get left behind. Then some infections like this can cause a hearing loss. This is called fungus in the ear. It looks like wet newspaper inside the ear. This is very common in the monsoon season. Then there may be a ear infection by itself. If you have a cold, our ear, nose, throat is all interconnected. So if you have a cold, then sometimes the infection from the nose goes to the ear, and then you develop a full-fledged bacterial ear infection. So this will also cause deafness. So we have to treat it. Then you may develop ear perforations. If you don't treat that ear infection, then you may get perforations like this. Then if you have a perforation, then you have to undergo a surgery where you take some skin from the back of the ear. It is called as fascia, and you use it to fill this perforation in the ear. Sometimes there is infection in the back of the ear, the bone in the back of the ear, this area. Then you have to remove that. It is called as a cholesteatoma, and the surgery is called as mastoidectomy. Sometimes those three bones which I mentioned, because of repeated infection, these bones get infected and then they get eaten up. Then you have to sometimes put an implant for you to hear, because the sound has to be connected from the eardrum to the cochlea, and the only way to connect it is by using an implant. Then there may be some tumors which are there inside the ear, a bony tumor or skin tumor. These can lead to hearing loss. But the most common problem is a earbud. The earbud has caused lots of problems with everyone. We may try to put the earbud in our ear to clean our ear. You may go too much inside and you can rupture the eardrum. As I told you, it's like a very thin, papery material drum. So you may go too inside and rupture it. Then you can see a perforation like this in the eardrum. Sometimes an accident may cause fracture of the ear bone, and then you may have blood collecting in the eardrum, and then you can get this problem. So there are some other reasons why we can also get that sensory neural hearing loss. Is sometimes you may have had a road traffic accident, then you got an injury to the skull, then you can have it. Some people have worked in they may have worked in factories where the sound was very loud, and for years they worked in the factories. Then you may end up getting a hearing loss as we grow older. Bomb blasts, some ear infections like tuberculosis, enteric fever, that is typhoid, meningitis. These are some of the infections which are in the body,
but they can lead to a hearing loss. Sometimes you may have taken some antibiotics, such as medicines for malaria. Sometimes one may have taken injections for TB like streptomycin, then some kidney medicines. They also can cause nerve loss in the ears. So, how do we treat all these nerve losses? We have to treat it by using a hearing aid. There are these different types of hearing aids available, and that is the way to treat a sensory neural hearing deafness. Now, these are two graphs of two different patients, and you have to both of them have deafness, but who should be wearing a hearing aid is explained here. If you can see this graph, the initial hearing loss is not much, but later on it goes down. So if your hearing loss up to 2000 frequency is not much, then you are okay. You need not wear a hearing aid. But if you are this patient does not need a hearing aid right now. But this patient who's up to 2000 frequency, also the hearing loss is more. So this patient needs to wear a hearing aid. So not all age-related hearing loss need to wear a hearing aid. That is something which is important to keep in mind. Also, along with some people may not have a hearing loss. So what should we do to make sure that it doesn't happen to us, or at least prolong the period before we actually develop a hearing loss? So the first, as I mentioned to you, do not put any buds in your ears. Our ear canal can clean on its own. So unless some people have a tendency to get wax in their ears, but otherwise you don't need to actually clean your ear with a earbud. Don't put any garlic. We have a tendency to, if little pain is there, they put oil of any type, heat the oil, put garlic in the ear canal. So don't do all that. Hydrogen peroxide, some people put. Don't do. They can cause burning of the ear canal or the eardrum, which will lead to other problems. If you do see that there is some ear infection, some pus is coming out, there is pain, which is not resolving in a day or so, then do go and see a doctor for that. This is just a picture showing you the different types of hearing loss. Okay, anything above 90 dB is loud and we should not be hearing. So these different types of hearing losses are sounds, different types of things make different sounds, and we should make sure that we remain in the range where the sound is less than 90 dB. Nowadays, children are a lot into wearing earphones. They have had to do online school on earphones. They like to play games on their phone with earphones. They are listening to music all the time on their earphones. So this is something which you may tell your children or grandchildren, that avoid using earphones for too long. That right now they don't have a problem, but they will develop a hearing loss much faster than our generation or your generation, who did not need to, who don't have this habit of using earphones all the time. So again, I would like to say that hearing loss once developed cannot be treated. You have to wear a hearing. I mean, for sensory neural hearing loss, once developed, is difficult to treat it. You have to just wear a hearing aid. But we can take care and do some things so that it doesn't happen to us. Or we can take care of our ears so that after aging, it will happen to some extent, but it doesn't keep getting worse. One is to protect our ears, wear headphones which don't have any noise in it, but just wear them so that the noise which is there in the environment will not come to the ears. If you avoid going to places where there's a lot of noise, like a nightclub or some concert where there's too much noise happening, if you happen to go there,
you go to a place where there is less noise. Stay away from those speakers. So if you're wearing headphones and you don't understand that whether is my this noise that I'm wearing hearing is it too loud or not, then you have what you need to do is ask the person next to you, can you hear the music which I am hearing in my earphone? If the neighbor can hear this music, means you are hearing it at a very loud volume and you have to reduce it. Again, if anytime you have to go for work where there's industrial noise, there is a lot of construction happening, wear earplugs. Or a simple thing, put cotton in your ears, big cotton balls, so that that loud sound doesn't go inside our ears. So how these are simple things. How long should your teenage person will say, I want to listen to music on my earphone. So how long can you hear? So you should not be hearing for more than 1 hour in your earphones or headphones. So make it a habit that in a day, not more than 1 hour use of headphones. Now, how do you know that how loud the sound can be for me to hear when I'm using headphones? When you have a phone, you should the level of the volume should be less than half the volume which is possible in your phone or in your iPad or iPod or your laptop. So the level should be less than half. So I've quickly gone through this. Our take-home message for everybody is do not clean your ears. The ear canal can clean itself. So don't put anything inside your ears like a pin or a earbud, oil. If you do feel itchy or you do feel there is a problem, go and see your doctor. Then you do regular hearing checkups. After 50, you should do a checkup where you do your audiometry every alternate year just to make sure how your hearing loss is progressing. And last but not the least, prevention is better than cure. So if you take care of your ears, stay away from noisy environments, don't use earphones too much, and if you do, use it at a lower volume. Yeah. So thank you. Thank Now you, we can Dr. Vora. questions if we have. Definitely, we'll take the questions. Just request you to stop the presentation. So Dr. Vora, I think the first thing that happened after looking at your presentation is that I went ahead and reduced the volume of my laptop to half. So I'm already following that. I'm already Yeah, trying that's to. good. Huh? I'm already trying to figure out things like how you have told us, and hopefully our Khayal community members can also do that so that they can prevent the hearing loss and keep on hearing people. Now it's a different thing. ये कभी-कभी हम बोल देते हैं अगर किसी की बात नहीं सुननी हमें तो हम बोलते हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा. ओके, तो वो बात अलग है. बट अब हमें जितना हम हमारे बॉडी को प्रिजर्व कर सकते हैं, जितना हम बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं, हमें एक्टिव रखना है. इसीलिए हम डॉक्टर वोरा जैसे एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं ताकि वो हमें एक्सपर्ट टिप्स बताए, एक्सपर्ट्स वे बताए, जिससे हम हमारा जो ये नया फेज है, जो हम सीनियर बनते हैं, जो हम एल्डर्स बनते हैं 60 के बाद, वो हम बहुत ही अच्छी तरह से मनाए और बहुत खुश रहे. हमारा रिफर एंड विन कॉन्टेस्ट भी शुरू है, तो यू कैन रिफर अप टू 10 मेंबर्स टू द खयाल कम्युनिटी. और रिफर करने के लिए आपको बस हमें 10 लोगों का नाम और नंबर देना है, उनका एज और उनका सिटी भी बताना है, एंड यू हैव टू टेल देम अबाउट द एक्टिविटीज दैट वी हैव इन द खयाल कम्युनिटी एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. और ये इंफॉर्मेशन आप हमारे ऐप में जाके डाल सकते हैं, या फिर आप हमें राइसा को, मुझे, चिन्मय, अल्फिया या मारियो, किसी को भी व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज सकते हैं. So I will share the numbers of the entire team in the chat, and you can go ahead and send us the contacts for all of them. And Raisa, we also would like to announce the meditation camp for next week. Yes, that's right. We'll be starting a meditation camp, which is going to be for 5 days, 5 consecutive days.
It will be starting on the 4th of April, that's next Monday, and will be till Friday, that's the 8th of April. So it will be a very interactive class where in the first 3 days, the person who's coming will talk about and give us a full understanding of how to meditate and what you need to do, what are the important things. Post which he will deep dive into the whole meditation and do a full class. So please do attend. It's going to be a morning session because meditation is best in the morning, right, Vikas? Yes. तो जैसे रायसा जी ने कहा है कि एक ये जो मेडिटेशन कैंप हम हमारे ख्याल कम्युनिटी मेंबर्स के लिए रखने वाले हैं अगले हफ्ते फ्रॉम द 4th टिल द 8th, तो ये 5 दिन का कैंप है. एंड आइडियली अगर आपको ये कैंप अटेंड करना है तो यू शुड अटेंड ऑल द 5 days, क्योंकि हर एक दिन अलग होने वाला है. एंड दिस इज स्पेशली डिजाइंड एज मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स. तो आप अगर मेरे जैसे हैं और आपको मेडिटेशन का एम भी नहीं आता है, आपको मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं आता है, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करने को बैठता हूं तो मैं खाने के बारे में सोचता हूं. तो आई डोंट थिंक आई एम मेडिटेटिंग करेक्टली. सो मुझे भी सीखना है मेडिटेशन के बारे में एंड आई वांट टू ट्राई टू गेट द बेनिफिट्स. उससे क्या लाभ हो सकता है ये भी मुझे चेक करना है. और अगर आप भी मेरे जैसे नए हैं और आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो ये बहुत ही अच्छा कैंप होगा आपके लिए. ये हमारे ख्याल कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है, फ्री है एज यूजुअल. ऑल एक्टिविटीज आर फ्री, बट ये सुबह होगा 8 बजे से लेके 9 बजे तक, बिकॉज द बेस्ट टाइम टू डू मेडिटेशन इज इन द मॉर्निंग. सुबह जब हमारा माइंड एकदम फ्री होता है, देयर आर नो वरीज एंड आवर माइंड इज फ्रेश, दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू मेडिटेशन. सो इफ यू वुड लाइक टू अटेंड दैट कैंप, we will share the information. ये सैटरडे और संडे हम मेडिटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, वो कैंप के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आपको. एंड जस्ट लाइक हाउ यू आर ज्वाइनिंग दिस इंफॉर्मेशन, हम आपको भेज देंगे. इसके अलावा हमारा एक टैलेंट हंट भी है. तो टैलेंट हंट में इफ यू हैव एनी एक्सपर्टीज और एनी टैलेंट्स दैट यू आर गुड एट, जैसे अगर आपको गार्डनिंग आता है या आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है या फिर आपको क्रोशे आता है या आपको पिकल बनाना आता है या कुछ भी आता है, एंड यू आर वेरी गुड एट इट एंड यू वुड लाइक टू शेयर दैट विद द कम्युनिटी, you can definitely do that also. Geeta ji, the camp will be conducted online, just like how we have our sessions. So these how we have our sessions at the evening, ये 5 दिन के लिए 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक अप्रैल का, अगले महीने, यस अगले महीने अप्रैल, ये 5 दिन के लिए ये रोज ये कैंप होगा. एंड यू कैन अटेंड फ्रॉम 8 in the morning to 9 in the morning. तो नाउ वी विल टेक क्वेश्चंस. हम क्वेश्चंस लेंगे. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली रेज योर हैंड एंड वी विल आल्सो लुक एट द क्वेश्चंस दैट आर देयर इन द चैट. तो फर्स्ट वी हैव प्रकाश जी who would like to ask a question to Dr. Vora. Good evening, sir. Hello, Doctor. It was very educative, and till the age of 70, I didn't know these things. So I am 70 years old, but अभी first time कान के बारे में इतना पता चला. So I must thank you for all these things. I have 2 questions. The first question is about the food habits. Are there some foods which damage the health of the ear, or are there some foods which help? जिसमें कुछ विटामिन या मिनरल ऐसे कुछ होते हैं जिससे कान को कुछ होता है क्या? Yeah, vitamin B12 is considered to be good for the ears. B12. So any food which has vitamin B12 can be used. There are no foods which will make your hearing like it's bad for hearing. There is no food like. So if the hearing loss is not food related, it's the noise you are exposed to and any problem with the ear. It's not got anything to do with food. But if you want to keep healthy, like we have like how we eat vitamin rich food, so that will help for the general well-being of our ears also. Okay. Isn't it a tablet that we have to take to sort of, जैसे बाकी चीजों के लिए बोलते हैं ना कि ये खाओगे तो ब्लड पतला रहेगा, आंखों के लिए कुछ कैरेट खाएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा आंखों के लिए ऐसा कुछ कान के लिए कुछ है नहीं.
अच्छा सुनेंगे तो अच्छा रहेगा. सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ये ऑडियोमेट्री करना चाहिए डॉक्टर के पास जाके. आपने सही कहा, हर गांव में इतने सारे होते नहीं है ऑडियोमेट्री. तो ऐसी कोई सिंपल टेस्ट क्या घर पे कि ये आवाज सुनाए आएंगे तो ठीक है, ये आवाज सुनाए नहीं आ रहा है तो कुछ इश्यू है मतलब? वो बहुत ही अभी क्रूड मेथड हो गया. आपको हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट करते हैं. तो अगर आपको अपना घड़ी का काटा सुनाई देता है कान में तो इट्स ऑब्वियसली, या आप ऐसे अपने फिंगर को रब करके देखो कान के आजू बाजू, तो अगर वो सुनता है तो ठीक है, आपका आवाज सही है. बट ये बहुत ही रफ मेजर है. आइडियली आपको कराना चाहिए हियरिंग, और अभी तो सब गांव में अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं है. अप टू 30 सिटी सब गांव में ENT सर्जन हैं, और इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए. ये सिंपल टेस्ट है, मोस्टली इट इज अवेलेबल एवरीवेयर. तो घड़ी का काटा सुना आ रहा है रात को और ऐसा सुना आ रहा है तो थोड़े दिन बाय एंड लार्ज ओके. पर ये नहीं आ रहा है तो दूसरे दिन ही डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा. हाँ हाँ. या आपकी घड़ी बंद हो गई है. थैंक यू वेरी मच. All right. So now we will take the next question from Mrs. Prakash Grover. यस, ऐसा है डॉक्टर साहब, मेरा एक कान से सुनता नहीं है, एक कान से सुनता है. मैंने मशीन भी लगा रखी है किंतु लगाती नहीं हूँ, बहुत दिक्कत होती है मशीन लगाने में. हेलो. हाँ, अगर आपको एक कान से हाँ जी बोलिए. जब भी आपको एक कान से सुनता है और दूसरे कान से नहीं सुनता है तो नॉर्मली मुश्किल होती है, क्योंकि एक कान से आप नॉर्मल आवाजें सुन रही हैं और दूसरे कान में वो जो साउंड हियरिंग एड से आता है वो थोड़ा अलग होता है, और जो हम सुनते हैं वो अलग साउंड होता है. तो दोनों में थोड़ी बहुत मुश्किल तो होगी. आप कोशिश करिए, तो अगर आप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे. उसको थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएंगे. आप छोड़ मत दो. क्या मशीन लगाऊं? हाँ हाँ जी. बहुत ऊंचा सुनता है मैडम, उनसे पता नहीं चलता कौन क्या बोला, डबल डबल आवाज आती है, बहुत पैसे खर्च कर बैठे. 2 बार मशीन बदल चुकी हूँ. अच्छा, दिक्कत होती है, दिक्कत तो होती है ना. तो अब ये कोशिश करती हूँ, राइट कार्ड से मुझे सुनता है, लेफ्ट से बहुत कम सुनता है, 10% ओनली. अगर मैं राइट कान में कन्वर्ट लेके सो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चलता कौन बजा रहा है. रात सीटी, विसल, अलार्म, बड़ी विशेष से कोई ठक ठक करता है जब जाके नींद खुलती है. ये चक्कर है क्या, क्यों इसके लिए? वो मशीनी इलाज है इसका. रात को तो मशीन लगा के सोते नहीं मेरे. तो फिर आपको वो करवट पे सोना होगा जहाँ पे आपका चलता हुआ कान बराबर रहे. तो नींद ही नहीं आती उस करवट में, ऐसी आदत पड़ चुकी है. देखती हूँ, कोशिश करती हूँ सोने की धीरे धीरे करके, आधा घंटा करके, ताकि आदत बन जाए. दिक्कत हो जाती बहुत ज्यादा. मेल भी आती, कहती आपको बैल बजा रहे, आप उठते नहीं हो. तो जब तक वो दरवाजा ना बजाएंगे ना तब जाके उठ पाती हूँ. एक कान से सुनता है, वो कान दब गया तो मुश्किल हो जाती है. तो वो कान का ख्याल रखिएगा अच्छे से, ताकि उसको कुछ ना हो. जो ठीक है उसका क्या रखूं ना. हाँ हाँ. नहीं ठीक वाला टचवुड ठीक है. मेरा कान किसी जमाने बहुत बहते थे डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा बहता था, बहुत परेशान थी मैं. कई साल तक बहता, उसमें फंगस ही हो जाती थी, दिक्कत होती थी. पर अब टचवुड ठीक है, बहता नहीं है. बहुत दिक्कतें हैं, मैंने सामना करा है, बहुत फेस करा है इसके लिए कान. ठीक है. ऑलराइट. सो प्रकाश जी, जैसे डॉक्टर ने कहा, आई थिंक वी कैन फॉलो दो स्टेप्स एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट member. We'll go to Priyesh Daveji. Namaste, good evening. Yeah, good evening. You are able to hear? Yes. Yes. Yeah. So doctor, I just wanted to know this age-related deafness. Is it means a normal course of time? It is happening to almost everybody, or it can be prevented? Some amount of deafness will happen with aging. But it can be prevented, as I mentioned, by taking care of your ears. Don't fiddle around with your eardrum, your ear canal.
Try to avoid using headphones as much as possible. Stay away from loud noises. If you happen to be in a loud environment, wear headphones or earplugs so that the loud sound doesn't go to the ears. So if you do all these take all these precautions, the progression will be halted. But some amount is expected to happen as we age. But it is related to nerves, no? Yes. Yeah. So then as the nerves get weaker with aging, some amount will happen, but it's very variable. Some people have it, some people don't have it so severe. It's not that everybody needs to wear a hearing aid, as I showed you in that graph, but some amount will happen. So there is no either medicine or some sort of exercise which can prevent this even for older age. It's like how we get glasses, reading glasses after 40, or it's something like that. You will develop some amount of it, but if you take care, it will not bother you for a long period of time. Okay, thank you. All right, thank you, doctor. Next question from Sushil ji. Good evening, Sushil ji. How are you? Good evening, Vikas ji. Good evening, Dr. Shah. Good evening, Sushil ji. In my family, there is a hereditary problem. Whenever they get severe cold, it travels to the ear. So in my children and grandchildren also, they are also have a tendency to get the same problem. What is the solution for this? You need to see an ENT, figure out why this is happening. No, but it's happening hereditary also, it can happen. Just 1 minute. Huh? Hello. Okay, so after Sunil ji, we'll take a question from Saida Rizwan, और उसके बाद we have Sundar Mansukani, and I see Geeta ji has also asked one question, right? To leave by 6:30, yeah? Yes, definitely. तो हमारे पास और कुछ चंद मिनट है, जल्दी से हम एक एक क्वेश्चन ले लेंगे ताकि डॉक्टर हमें बता पाएगी. All right. तो सुशील जी, as doctor said that definitely something like this, you have to go ahead and check with an ENT specialist, and you may have to do a couple of tests. विकास जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे बच्चों में भी हो गया, ग्रैंड चिल्ड्रन में भी हो गया, तो who should go to the doctor? Everybody who has a problem. The cold can lead to a hearing loss also. So why the cold is happening, you need to figure out. The cold is happening in children also and grandchildren also. The cold happens to everybody, but it travels to the ear. Yeah, so it doesn't happen to everybody like that. You have to figure it out with an ENT doctor. I see. My children and grandchildren all should go to the doctor and get it checked up? Yes. Whoever has the problem should get it checked. Okay, thank you. All right. Thank you, Sushil ji. इसके बाद हम जाएंगे साइदा रिजवान जी के पास. Hi, good evening. Yes, hello. Yes. आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है रिजवान जी. वो तो मेरा तो भाई एज फैक्टर के बारे में पूछना था, लेकिन वो तो अभी जवाब दे ही चुकी कि 40 के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. Okay. लेकिन मेरा ये भी एक पूछना है कि एयर में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एकदम हमेशा लगता है कि कान को पिघलाना चाहिए. तो एयर में इचिंग वगैरह जो होता है, उसका क्या प्रॉब्लम दूर किया जा सकता है उसको? कभी कभी वैक्स कलेक्ट होने से इचिंग होता है, तो आप वैक्स को सॉफ्ट करने के ड्रॉप्स आते हैं, जैसे सॉलीवैक्स ईयर ड्रॉप्स है, वैक्सॉल ईयर ड्रॉप्स है, वैक्सीक्लीन है, तो आप 1-2 ड्रॉप डालकर देख सकते हैं. अगर उससे आपको फायदा कर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप डॉक्टर को दिखा दीजिए. डॉक्टर से कंसल्ट करना. ओके, थैंक यू. Thank you, Mr. Said. Okay. We'll also go to Sundar Mansukani ji. Before that, I will take a quick question from the chat. Indu Sethi ji has asked that
what is the accurate drops for wax problem and how to clean the ear after drops? So, as I said, Solivax eardrops, Waxol eardrops, any of these eardrops can be put. Sometimes the wax comes out after putting these drops, then nothing more needs to be done. Otherwise, you again need to see a doctor and they will help to flush out all that wax. You should not put anything inside your ears to clean it up yourself. If it comes out on its own, then well and good. Otherwise, you have to go and see the doctor. ओके सो जैसे डॉक्टर ने बोला है, इट इज डेफिनेटली अ नो नो कि हमें हमारे कान में कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इंडियंस है और हम बहुत सारे नुस्खे हम यूज करते हैं, बट ये नुस्खे नुकसान देते हैं बहुत बार। तो इसलिए ऑलवेज गो टू एन एक्सपर्ट, ऑलवेज गो टू एन ENT डॉक्टर हु इज अ स्पेशलिस्ट and who can take care of your ear better than what we can, and what our nuskas can do. Sundar Mansukhani ji after that. Namaste, good evening sir. हेलो। Yes Sundar ji, good evening. हमको थोड़ा इचिंग होता है कान में 2-3 बार दिन में, तो मैं ये जो चश्मा है ना उसके जो फ्रेम है वो कान में डालता हूँ या थूक से साफ करता हूँ, फिर ठीक हो जाता है, और कोई मैं मेडिसिन वगैरह नहीं लेता हूँ। तो कभी कभी हवा आती है या कोई मच्छर आ जाता है, कुछ ऐसे आता है ना, तो 2 मिनट के लिए इचिंग होता है, दिन में 2-3 बार होता है मेरे ख्याल में। और कभी कभी मैं वो कोकोनट ऑयल डालता हूँ, तो ये ठीक है या नहीं है? नहीं ठीक है जी, आपको अपना चश्मा का तो बिल्कुल नहीं डालना है अंदर डंडी। वो डंडी आपके बालों में भी टच करता रहता है, अपने बालों में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, तो वो डंडी आपने कान में डाल दिया तो कान में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। अगर आप खुजली आती है तो आप थोड़ा बहुत ये वैक्स का ड्रॉप डाल दीजिए। अगर इससे आराम नहीं मिला तो आप डॉक्टर को दिखा दें। नहीं, डॉक्टर को दिखाया, वो बोलते बिल्कुल ठीक है। कभी कभी थोड़ा हवा की वजह से मट्टी आती है या समथिंग, तो मैं ऐसे करके थूक से ऐसे उंगली से भी कर लेता हूँ, ठीक हो जाता। हमारे हिसाब से तो ये गलत है, लेकिन थूक भी नहीं लगानी चाहिए। थूक भी लगा, अब फिंगर्स में भी इन्फेक्शन होती है, वो फिंगर्स हमारे हाथ सब जगह टच करते रहते हैं, तो आपके नाखून के नीचे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो अलाउ नहीं। ठीक है, कंट्रोल करूंगा। तो कौन सी वैक्स लगाना चाहिए? सॉलीवैक्स ईयरड्रॉप्स 1-2 टीपा डाल दो। सॉलीवैक्स, विकास जी आप उसको डेफिनेटली टाइप कर दीजिए। यस, सो डॉक्टर वोरा, इफ वी हैव टू मीट यू, यू आर प्रैक्टिसिंग इन बॉम्बे, आप बॉम्बे में प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप हमें आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं, आपके टाइमिंग्स दे सकते हैं, तो हमारे बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, अगर उनको उनका चेकअप कराना होगा या ऑडियोमेट्री टेस्ट कराना होगा या एनी हियरिंग लॉस का जो प्रॉब्लम है, वो उसके लिए भी आपको हम विजिट कर पाएंगे। तो इफ यू कुड शेयर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विथ मी, वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप्स विद द ख्याल कम्युनिटी। आई विल गो अहेड एंड पुट इट अप इन ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप्स। अगर आपको फिर भी डॉक्टर के साथ स्पेशल कोई अपॉइंटमेंट लेना है, तो आई विल डेफिनेटली शेयर हर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विथ एवरीवन फ्रॉम द ख्याल कम्युनिटी। डेफिनेटली आप कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट द बेस्ट आई कैन। All right, so one last question from Bora ji, and then we can conclude with the session. Hello, good evening. Good evening, Bora ji. I am 74, so एज के हिसाब से थोड़ा बहुत हेयरिंग लॉस तो है। इतने सारे एडवर्टाइजेस आते हैं हेयरिंग एड्स, so how this hearing aids working? हियरिंग एड से आप अलग अलग टाइप के होते हैं, जितने एक तो डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है। एनालॉग हियरिंग एड सिर्फ आवाज जो आती है वो बड़ी करती है, इट्स लाइक अ माइक, वो आवाज बड़ी करती है और फिर आपको कान के पर्दे के नजदीक लेके जाती है वो आवाज, और फिर आप सुनते हैं। डिजिटल हियरिंग एड में अलग अलग चैनल्स होते हैं, इसमें जितने चैनल ज्यादा है
उतनी क्वालिटी ऑफ साउंड बेटर होती है. ओके, Okay. लाइक नियर नॉर्मल ऐसा बोले जाए तो जितना आप चैनल का ज्यादा खरीदोगे तो उतने चैनल का आपका आवाज ज्यादा रहेगा, बेटर. Clarity. लेकिन जितना Clarity. चैनल आप ज्यादा लोगे इतना महंगा भी होगा हियरिंग एड. Yeah, तो exactly. Right. तो आप अपने बजट से हिसाब से ले सकते हैं. दूसरी बात ये है, मेरे हिसाब से आपको कोई ईएनटी डॉक्टर के साथ जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है उनसे हियरिंग एड लेना चाहिए, ना कि बल्कि बाजार से उठा लिया. क्योंकि हर एक का सुनने का एबिलिटी अलग होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में. तो अगर आप ऐसे बाजार से ले लेंगे तो वो तो क्या बैटरी में चला दी ऑन कर दोगे, इट विल बी लाइक अ माइक. आप माइक से बढ़ाओगे, सुन लोगे. फिर अलग हर टाइप का साउंड, बाहर का जो भी रास्ते का आवाज या कोई हॉर्न या कोई सीटी, सब आपको बड़ा सुनाई देगा और वो आपको इरिटेट करेगा. फिर आप बोलेंगे ये हियरिंग एड बकवास है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं मदद कर रहा है. लेकिन अगर आप अच्छे डॉक्टर के साथ जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है या कोई सेपरेट ऑडियोलॉजिस्ट होता है उनसे आप लेंगे तो वो आपको आपके हियरिंग के हिसाब से वो हियरिंग एड एडजस्ट करके देगा. और फिर वो आपको ज्यादा, हर एक हियरिंग एड को आप जब पहनोगे तो थोड़े 1-2 महीने तो लगेंगे उसके साथ एडजस्ट होने में. लेकिन आप अगर ऐसे हियरिंग एड लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा वो रास्ता. बल्कि ऐसे ही हमने रास्ते से, मैंने दुकान से खरीद लिया. Yeah, so that more channels is more clarity. More clarity. Okay. Thank you. Okay. Okay, so thank you everybody. Everyone. It was a wonderful session with Dr. Krishna Vora. And as you see that deafness and hearing loss इतना सिंपल नहीं है जैसे हम सोचते हैं. और हमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, we have to visit a doctor, we have to visit a ENT specialist, because it's more than your eye, what your eye can see. हम सिर्फ बाहर का एक कान देखते हैं, अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट सिस्टम है जो डॉक्टर ही समझ पाते हैं. और इसके इंट्रिकेसीज और जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है डॉक्टर वोरा को ही पता है. हम जो यूजुअल नुस्खे करते हैं, we should avoid it. So I know it's time to end the session, but I would really like to thank Dr. Vora for coming here and spending the time with the Khayal community. We hope to see you again. We had, it's never enough to spend time with an expert to know more and more and understand more and more about elders and seniors. So thank you very much. And a big thank you to all the members for attending the session. Thank you. Nice to meet all of you. Goodbye, Dr. Vora. And I'll wait for the information so that I can share. I will message it to Mervin. All right. And I hope we can connect with all of you. Definitely. And I'm anyway available on Google or Practo. My details are there. So you can just Google me, Dr. Krishna Vora. I'll come up. It's there. We'll do Okay. that. Thank you. very Nice much. to meet all of you. Goodbye, everyone. Bye. Thank you.